हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण मन समस्त को सरत एजुकेशन को स्वागत। आमे आज लाइव आछुंती फर्स्ट टाइम जोथरे कि आमे जो बिजनेस एनवायरनमेंट ऊपर डिस्कशन करछंती, बिजनेस एनवायरनमेंट ऊपर डिस्कशन करछंती, तारि ऊपर किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिवा। आज हमर ये सेकंड वीडियो को जागी स्क्रीन शेयर कर दोछि। देखन तो ये रहला शेयर हला पड़तु निश्चित आपण माने क्लियरली देखि पड़तुवे जोटा कि आसला क्लियर आसला। ओके, देखो आमे आज कवर करिवा। लास्ट वीडियो रे हमें कोन कवर करथिले, लास्ट वीडियो रे हमें इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरनमेंट मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट देखथिले और ता ऊपर किछि क्वेश्चन डिस्कशन करथिले। आज रो वीडियो रे आज हमें कोन कवर करिवा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कवर करिवा आ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो पार्ट्स होला ताको कवर करिवा, ता ऊपर आउ एक्टिविटीज कवर करिवा। ओके, ये देखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को मेनली हमें चारि प्रकार रे डिवाइड करथांती, जेमति इकोनॉमिक किछि पॉलिसी आकार रे, तापर इकोनॉमिक प्लानिंग रे आ इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन हे गला, इकोनॉमिक अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हे गला। ओके, आ गोटे आकार हम डिवाइड करथां जेमति माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ताको हम डिवाइड करथां। जेमति जदि इकोनॉमी देखिबा, इकोनॉमी पॉलिसी देखिने हमर 5 प्रकार मेनली इंपोर्टेंट बेसिक पॉलिसी रही और बहुत प्रकार पॉलिसी रोचे, किंतु ये आम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ये 5टा बेसी इंपोर्टेंट रहा मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक्जिम पॉलिसी एंड एग्रीकल्चरल पॉलिसी। नेक्स्ट देखो इकोनॉमिक प्लानिंग रे कोन रहला, इकोनॉमिक ग्रोथ रहला, एम्प्लॉयमेंट गोल्स रहला, प्राइस स्टेबिलिटी रहला। नेक्स्ट इकोनॉमिक अकॉर्डिंग टू फंक्शन रे कोन रहला, मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमी एंड एडवांस इकोनॉमी। ये रहला कोन अकॉर्डिंग टू फंक्शन रे। नेक्स्ट हो स्ट्रक्चर हो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड मार्क्सिज्म। ये सब रहला कोन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जोटा कि बेसिकली ये जहाँ भी हमें देखले वर्तमान ये सब जान कोन मैक्रो इकोनॉमिक रो फैक्टर्स गुडा को सेमती कहला माइक्रो जहाँ रहा से केमती इंपैक्ट पकोज हमर इकोनॉमी ऊपर। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमी, माने प्रति इंडिविजुअल जो आम इकोनॉमी रे माने आम कंट्री रे जेते प्रकार इंडिविजुअल अथंती, माने से पीपुल आकार हो किंबा आर्टिफिशियल हो, जेमति कि नॉन इंडिविजुअल हो, जिम ताकर कोन होची इकोनॉमी एक्टिविटी रहउची सच हाउस होल्ड ला, फार्म ला, बिजनेस ला, इंडस्ट्री ला, समस्तंकर प्रॉपर डिसीजन सिंगल डिसीजन कोन होची सेटा होची माइक्रो आकार रहला। जेमति माइक्रो फैक्टर कोन कोन आसो, सप्लाई एंड डिमांड आसीबो, कोन आसीबो सप्लाई एंड डिमांड आसीबो। जेमति कि रहला एटा कोन देखो। ओके, सप्लाई एंड डिमांड आसीबो, प्राइस स्टेबिलिटी आसीबो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आसीबो, मार्केट स्ट्रक्चर आसीबो, कंज्यूमर बिहेवियर आसीबो, नेक्स्ट प्रोड्यूसर बिहेवियर आसीबो, तापरे फैक्टर्स मार्केट। देखो ये सब माइक्रो फैक्टर पर टाइप लागु सप्लाई एंड डिमांड। गोटे पर्टिकुलर मार्केट रे कोन सप्लाई एंड डिमांड रोची, तापर तार कोन मार्केट रो कोन डिटरमाइंस सो रोची, प्राइस रो कोन क्वांटिटी रोची किबा क्वालिटी कोन रोची, गुड्स रो सर्विसेज कोन रोची सेटा को हम देखतांती। सेमती जो फैक्टर गुडा को रहला ए सब कोन इंडिविजुअली हमर छोटे मार्केट रो माने इकोनॉमी रो बहुत छोटे छोटे एरिया को एमाने कवर करथांती। सेमती मैक्रो फैक्टर्स रे कोन रहला देखो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कोन कहूची मेजर्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। हमर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रो पूरा ऑल ऑफ इंडिया रो इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस कोन होची, हम जीडीपी द्वारा ता मेजर करथांती। अनएम्प्लॉयमेंट हो अनएम्प्लॉयमेंट ता कोन करते कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है, इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड वेलफेयर। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड वेलफेयर ऊपर इम्पैक्ट पड़ो। तापर इन्फ्लेशन रहला, फिस्कल पॉलिसी रहला, ओके, मॉनेटरी पॉलिसी रहला, इंटरेस्ट इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस रहला, इकोनॉमिक ग्रोथ रहला। ये सब को रहउची देखो। फिस्कल पॉलिसी कोन गला हमर एग्रीगेट डिमांड, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन ए सब ऊपर फिस्कल पॉलिसी रे इम्पैक्ट रहबो। मॉनेटरी पॉलिसी रे कोन रहउची हमर जो क्रेडिट पॉलिसी रहला किंबा प्राइस रो स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट हम क्रेडिट को फाइनेंस को केमती फुली एम्प्लॉयमेंट करा जाय परिबो, फुली एम्प्लॉयमेंट करा जाय, क्रेडिट को फुली कंट्रोल केमती करा जिवो, ता द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी हेतला हम यूज करथाय, का द्वारा सेंट्रल बैंकिंग द्वारा करथांती। इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस हमर केमती कोन हम डोमेस्टिक ऊपर मार्केट ऊपर इकोनॉमिक कंडीशन ऊपर भी डायरेक्ट इंपैक्ट पकेथांती। इकोनॉमिक ग्रोथ भी जेमती कि रहला विभिन्न प्रकार सेक्टर रह गला कि से इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर प्रोडक्टिविटी हो, लॉन्ग टर्म हो किंबा मीडियम टर्म आउ रहला हमर लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर भी इंपैक्ट हो। ए सब रहला हमर कोन
ଆମର ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିक ଫ୍ୟାକ୍ଟर्स ଆଉ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିक ଫ୍ୟାକ୍ଟर्स ओके ଏବେ ଆମେ क्वेश्चन ଦେଖିବା ये माइक्रो सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जीडीपी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स स्टॉक मार्केट इंडेक्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट कोड हवा आंसर देखो इथर आंसर फिस्कल हमर कोन कहला आ भितर कोटा मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रा आसु नै जीडीपी आसु जी ओके हमर हमर कोरा आसु नै ଆମର ଆ ଭିତରେ ଆସିବନି ଦେଖ ଯୋଉ ରହିଲା କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରହିଲା କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଟା ଆମର ମାକ୍ରୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସିବ ନା ଏଟା ଆସିବ ମାଇକ୍ରୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସିବ ତାର ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି ରେଫର୍ସ ଟୁ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ପଲିସି ରିଲେଟେड ଟୁ ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି ଯୋଉଟା ରହିଲା ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ପଲିସି କୋଉଠି ରିଲେଟେड କରୁଛି ହେଲା मॉनेटरी सप्लाई टैक्सेशन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंटरेस्ट रेट मार्केट रेगुलेशन फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कथा कहूँ नेक्स्ट आसला सेंट्रल बैंक मेजर्स डिसीजन रिगार्डिंग सेंट्रल बैंक का ऊपर डिसीजन लेता है जोटा कि हमरो मॉनेटरी पॉलिसी ऊपर से डिसीजन है ओके नेक्स्ट देखो 4 नंबर क्वेश्चन व्हिच फैक्टर कैन हैव रिफल डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मार्केट स्ट्रक्चर ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन सोशल वेलफेयर कोटा आसीबो हमरो आंसर आसीबो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन ओके कौन कहला हमर आंसर कौन हम ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन डोमेस्टिक इकोनॉमी रो रिफिल इफेक्ट गुरा कौन होता है ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन होता है मार्केट स्ट्रक्चर रेफर्स टू द डिग्री ऑफ कंपटीशन विद इन मार्केट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गवर्नमेंट रेगुलेशन कोठ हम हमर आंसर देखो कौन हम हमर आंसर हम ए हम the degree of competition within the market our जोटा कि मार्केट स्ट्रक्चर हम कहै मार्केट भीतर पर्टिकुलर गोटे मार्केट भीतर हम कोन कंपटीशन रहउची या माने केते डिग्री रहउची केते हाई रे रहउची केते लो रे रहउची सेटा को हम जेतल एनालिसिस करथन सेटा हम मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस कह जाय नै कि सेटा को कंपटीशन ही कह जाय नेक्स्ट कहला टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैन लीड टू इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज प्रोडक्टिविटी changes in consumer behavior reduce innovation कोटा आइ परिबो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कोन कहउची लीड टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट नहीं अनएम्प्लॉयमेंट करियो कि डिक्रीज प्रोडक्टिविटी नहीं एटा बिनो चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर इटा हबा आंसर हमर कोन जेतबे हमर एडवांस आसीबो जेत हमर कोन हिता एडवांस आसी जाय थाय त टेक्नोलॉजिकल चेंजेस रे हमर एडवांस बहुत आस्ते त हमर कोन प्रॉब्लम हिता हमर किछि प्रॉब्लम नै था बहुत किछि इंपैक्ट आस्ता है जेमति कंज्यूमर बिहेवियर ऊपर हमर इंपैक्ट आस्ता है next causes legal and regulatory environment includes law and regulation related to infrastructure development market structure business operation and consumer rights fiscal policy what have answer our answer about business operation and consumer rights of answer business operation and consumer rights of our answer okay kon habo next देखो next kon कहला infrastructure refers to social factors transportation communication energy system market regulation infrastructure कहा को फोकस करछि हमर ट्रांसपोर्टेशन रहइबो नै कि ट्रांसपोर्टेशन रहइबो कम्युनिकेशन रहइबो एनर्जी सिस्टम रहइबो नेक्स्ट देखो 9 नंबर क्वेश्चन political stability refers to political stability मीनिंग कोन पचारला कंज्यूमर प्रेफरेंस लेबर मार्केट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हां एटी कोन कहला इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आमे लास्ट वीडियो रे ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऊपर हम कथा हेतले जेमते कि हमर इंडिया रे कोन होइचे लास्ट 90s रो हमर देश रे कोन होइचे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आसी जो सरकार आसी कि 5 वर्ष फुल्ली रहिची आ को सरकार 10 वर्ष भी रहलानी लास्ट दीटा टर्म हे गला कोन मोदी सरकार लास्ट 10 वर्ष ला अछि पुनी ता पूर्व 10 वर्ष के थिला हमर मनमोहन सिंह सरकार था ददस एमती जदी हमर कोन स्टेबिलिटी रहबो ता हमर कोन रहबो इन्वेस्टर माने हम इंडिया ऊपर इंडिया रो बिजनेस ऊपर इंडिया रो कॉन्फिडेंस ऊपर ताकर कॉन्फिडेंस आछो सेटा होची कोन होची इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस कहबा अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज क्रूशियल फॉर बिजनेस पॉलिसी मेकर इन्वेस्टर का पई इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहा पई इंपोर्टेंट हेता है बिजनेस एमानन पई हेता बिजनेस पॉलिसी मेकर एंड इन्वेस्टर मान पई व्हाट डज द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर जीडीपी कोन मेजर करछि total value of goods and services produced domestically and abroad total value of goods and services produced within a country's border okay कोन हो आंसर एटा जो हमर आंसर इज वो बी आंसर कोन होबो ए जो सेकंड है जोटा कि हम एबे बोलले द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विदिन ए कंट्रीज बॉर्डर
ओके एटा को हमें जीडीपी कहते। नेक्स्ट देखो 12 नंबर व्हाट डज द जीएनपी मेजर्स। जीएनपी मेजर्स कौन करछि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड domestically and broader abroad total value of goods and services produced within a country border कोटा हो आंसर हमर आंसर हबो देखो एटा होछि हमर कोन टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड एटा को हमें जीएनपी कहते। ओके एटा ऊपर क्वेश्चन थिला एठी भी थिला जे माने जेतल कहि दो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली आ अब्रॉड दीटा मिसै देतो एटा जीएनपी हबो। ओनली हम कंट्री बॉर्डर भीतर है हम कौन कहबा जीडीपी कहबा। ओके व्हाट डज द इन्फ्लेशन रेफर्स टू। इन्फ्लेशन को काहा को रेफर्स करता है रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस रेट ऑफ इंक्रीज इन रेट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस रेट ऑफ इंक्रीज इन वेजेस रेट ऑफ डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट कौन हबो आंसर कौन हबो हमर आंसर हबो रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस हबो। इन्फ्लेशन इंक्रीज माने कोन हमर प्राइस बढ़ी छि बोली इन्फ्लेशन आसी छि। ओके आमे पर्टिकुलर इन्फ्लेशन ऊपर हमर अलग आ गोटे वीडियो करिवा सेथरे इन्फ्लेशन पूरा थ्योरी टा कवर करिवा। ओके हेतरे इन्फ्लेशन पूरा डिटेल्स हमर कवर छि। नेक्स्ट देखो व्हाट डज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेजर्स। अनएम्प्लॉयमेंट रेट काहा को मेजर करछि अनएम्प्लॉयमेंट रेट काहा को मेजर करछि देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमर मेजर करिवा परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्सेस दैट इज एम्प्लॉयड कौन कहला परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्सेस दैट अनएम्प्लॉयड एंड एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एटा हबो हमर आंसर कौन हबो एतिकी जो हमर आंसर बी जो आंसर परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्सेस दैट अनएम्प्लॉयड एंड एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट व्हाट डज द एम्प्लॉयमेंट मेजर्स। ओके नेक्स्ट देखो व्हाट डज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मेजर्स। व्हाट डज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मेजर्स percentage of employed population percentage of labor force that is unemployed actively seeking employment what have answer देखो आंसर हबो हमरो percentage of labor force that is unemployed and actively seeking employment सेटा को हम कोन कहबा labor force ही कहबा actively seeking unemployment जो टाइप रहला। ओके नेक्स्ट देखो हाउ डू इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाउ डू interest rate influence economic activity they have no impact on economic activity they encourage borrowings and investment they discourage borrowings and investment they have no impact on the consumer spending कौन हो आंसर हबो थोड़ा बी हबो कौन कहूची they encourage borrowing and investment they encourage borrowing and invest इछु आपन आंसर इछु। ओके इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस कौन करछि इन्फ्लेशन ने इनक्रीज करिवो borrowing and investment को what is the key driver of economic growth reflected in business in household expenditure what is a key driver economic growth reflected in household expenditure consumer spending business investment government spending taxation policy economic growth कथा कहूची कोठी हाउसहोल्ड आसीबो हमर गवर्नमेंट स्पेंडिंग आसीबो है कि कोठी आसीबो नहीं सॉरी गवर्नमेंट स्पेंडिंग आसीबो ने हाउसहोल्ड कथा कहला ना सॉरी हाउसहोल्ड कथा कहला जति हमर आसीबो कंज्यूमर आसीबो आसीबो कंज्यूमर स्पेंडिंग ता हमर आसीबो हाउसहोल्ड आसीबो। ओके नेक्स्ट देखो व्हाट इज इंक्लूड इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग बिजनेस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग कथा कहूची गवर्नमेंट स्पेंडिंग कोडी करिवो बिजनेस रे करिवो ना कंज्यूमर ताई करिवो एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज करिवो एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट करिवो कोडा हबो एटा हमर सी हबो आंसर expenditure on public goods and services हबो। नेक्स्ट देखो हाउ डू एक्सचेंज रेट इंपैक्ट बिजनेस एंगेजेस how do exchanges rate impact business energies engaged in foreign trade कौन कहला आंसर कोन हबो आंसर हमर हबो देखो they have no impact on international trade they affect import cost and export competitiveness इटा हबो आंसर rate of impact business engaged in foreign trade ऊपर जो engage होचे हमर कोन हबो affect import cost and export competitiveness पे impact पकड़ो। नेक्स्ट देखो 20 नंबर what does the balance of payment account for balance of payment account का पे हिते हमर नेशनल इंटरनेशनल पे हिते माने सी जो आंसर बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस हबो। what do economic growth factors provide historical data on gdp growth projection of future gdp growth rate current unemployment rate okay measures of inflation कोटा आंसर हमर आंसर हबो देखो आंसर अब द टोटल वैल्यू सॉरी
कोन कहला प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर जीडीपी ग्रोथ रेट्स एटा हबो हमर आंसर ओके इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट गला फ्यूचर हमर जीडीपी केते रहइबो सेटा को हमर से कोन करियो फोरकास्ट करियो एटा आंसर बी हो आंसर नेक्स्ट 22 नंबर व्हाट डज द प्रोडक्टिविटी मेजर्स व्हाट डज प्रोडक्टिविटी मेजर्स the efficiency of resources utilization in producing goods and services the total value of goods and services produced माने कोन व्हाट डज प्रोडक्टिविटी मेजर कथा कहला हमर आंसर कोन हबो ताने आंसर देखो हमर हबो आंसर the efficiency of resources utilization in producing goods and services हबो हमर आंसर से फास्ट रही जो हमर आंसर which factor is not a measure of economic activity रो कोटा मेजर न बोली पचार जीडीपी consumer spending government spending consumer confidence index consumer confidence index गुड किछ नाही जोटा कि हम इकोनॉमिक मेजर रे यूज हेतै ओके नेक्स्ट देखो how do changes in interest rate set by the central banks affect business they have no impact on business they discourage borrowings and investment they encourage borrowings and investments they only affect consumer spending कोन हो आंसर how do changes in interest rate जदी changes आउला बाय सेंट्रल बैंक रे हेटा कोन हबो इन्वेस्टमेंट ऊपर हमरो इंपैक्ट पड़ो एनकरेज बोरोइंग्स हबो हमर सी हबो आंसर एनकरेज बोरोइंग्स एंड इन्वेस्टमेंट हबो आंसर ओके नेक्स्ट जिबा लास्ट क्वेश्चन व्हाट डज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिकेट कोन गला लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ कोन इंडिकेट करछ हमर से percentage of employment population percentage of population actively seeking employment percentage of population eligible for employment percentage of discourage of workers कोन answer of the percentage of population eligible for employment eta होची हमर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन माने हम जते पीपल अछन से माने लेबर फोर्स रे तो लेबर टर्नओवर रे कोन करछन पार्टिसिपेट करछन तेन करी फॉर एम्प्लॉयमेंट एटा हो आंसर ये रहला आजिरो क्वेश्चन सब प्रैक्टिस सल्ला में प्रैक्टिस करले ओके आको ये पीडीएफ को जो पीडीएफ टा जदी पाइबो चाहछन आप माने हमर टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करंतु ओके हम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करंतु हमर ओपीसी विजिटर ऑफ बुक्स भी हमें कोन करछो बुक्स भी आनी जो जहा कि 18 तारिख रो सॉरी 16 मार्च रो आसीबारे मार्केट को आसीबार अछि जदी आपण माने चाहउचंती कोन करिवे कांटेक्ट करिवे ओके टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करंतु टेलीग्राम चैनल रे जॉइन कला पर हमको कांटेक्ट मो डायरेक्ट नंबर अछि ता देरे हेटी मते व्हाट्सएप रे मेसेज कर परिवे किबा मन डायरेक्ट कांटेक्ट करते परिवे ओके ये रहला थैंक यू जय जगन्नाथ नेक्स्ट वीडियो रे भेटाओ